हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक नई रेवोल्यूशन की, जो कि आर्टिफिशियल लैंग्वेज की रेवोल्यूशन है, विच हैज़ हिट द इंटरनेट नाउ इट इज़। आज बात करेंगे हम बार्ड एआई। फ्रेंड्स, बार्ड एआई एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो कि गूगल ने डेवलप किया है, और इट हैज़ बिन ट्रेन्ड ऑन ए लार्ज मैसिव डाटा कोड एंड टेक्स्ट which can generate a lot of things. Actually, BARD AI is an answer to Chat GPT, which is a chatbot language model. Friends, BARD AI can generate text, can translate different languages, and can give you, BARD AI can give you beautiful answer in an informative way to your questions. फ्रेंड्स, बार्ड एआई इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट, बट फिर भी इसने काफ़ी कुछ सीख लिया है. इट कैन गिव यू आंसर्स इन ए ब्यूटिफुल वे, इट कैन क्रिएट टेक्स्ट, it can follow your instruction and answer accordingly to you. It's a powerful tool to create different things. You can generate many things from this. आप इसको बोल सकते हैं कि कोई पोइम लिखो, आप इससे कोई गाना लिखवा सकते हैं. So it is a useful tool for students, for any age group. For content creators, it can give the content. For writers, it can give script of the films. मेरे एक दोस्त हैं, एक फार्मा कंपनी में हैं. उन्होंने किसी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए, उन्होंने इसे यूज़ किया, तो उनको इतनी इन्फॉर्मेशन इससे मिली कि उन्होंने अपने 8 पेजेस का प्रोडक्ट मैनुअल तैयार कर दिया इस प्रोडक्ट पे. सो दिस इज़ वेरी यूज़फुल. आप यू कैन राइट, आप इसमें पोइम्स लिख सकते हैं, कहानियाँ लिख सकते हैं, बर्थडे सॉन्ग्स लिख सकते हैं. बट इसमें और चैट जीपीटी में एक अंतर है. चैट जीपीटी विल प्रोवाइड यू द आंसर which are already stored in the data before 2021. But BARD AI will give you the latest information. Suppose if you can ask, give me the today's top 5 news. It will give you, but Chat GPT will not. You can ask today's IPL schedule. It will give, but Chat GPT will not. So it has competitive advantage over Chat GPT. After all, this is from Google. So ask your question and get the better reply. See you again.